Jai Hind. Today we'll continue with the same applications of biotechnology. The next question comes as a environmental biotechnology. So what is environmental biotechnology? Environmental biotechnology is the solving of environmental problems through the application of biotechnology. So today also we have discussed in the guest lecture about our environment, but this is specifically related to biotechnology. We are using this particular branch of science for our environment. Environmental biotechnology is the development, use, and regulation of biological system for remediation of contaminated environments, land, air, and water, and for environment-friendly processes. So, what is it? We are using this specific and advanced technique for the remediation, remedy करना, treatment करना, problems को solve करना और एक healthy atmosphere create करना, एक healthy environment बनाना, अपने land, air and water को healthy रखना. And this me using the technique eco-friendly, यानी environmentally friendly technique होनी चाहिए. क्योंकि अगर हम अदर केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस या अदर प्रोसेसेस यूज करते हैं, दैट मे नॉट बी एनवायरमेंट फ्रेंडली. हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को ही यूज करके वो टेक्निक करें यूज जो कि रेमेडी कर सके एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स की, यानी एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन वी मे रेमेडिएट. सो बायो रेमेडिएशन suggests the use of microorganisms to remedy environmental problems. Now, environmental biotechnology in particular is the application of processes for the protection and restoration of the quality of environment. So what we are doing using this technique, we are protecting our environment and restoring in a natural condition. जो disturbance हुआ है, pollution cause हुआ है, तो हम इसको restore करें ताकि वो healthy environment हमें मिले. Environmental biotechnology can be used to detect, prevent, and remediate the emission of pollutants into the environment in a number of ways. We can use many ways to remediate all these conditions. Means we can detect the problems, we can prevent them, and we can remediate them. Then solid, liquid, and gaseous waste can be modified either by recycling to make new products. And we are today also discussing about that, or by purifying so that the end product is less harmful to the environment. Replacing chemical materials and processes with biological technologies can reduce environmental damage. So हम क्या करें? हम ये करें कि जो भी more toxic substances हैं, more toxic chemicals हैं या more toxic gaseous waste हैं, लिक्विड वेस्ट हैं, उनको रिसाइकल करें और एक नया प्रोडक्ट बनाएं जो कि लेस टॉक्सिक हो, है ना, as compared to that toxic chemical. Then in this way, environmental biotechnology can make a significant contribution to sustainable development. तो आज हमारा पूरा लेक्चर sustainable development पे था और ये उसी का एक पार्ट है. Environmental biotechnology is one of today's fastest growing and most practically useful scientific fields. Research into the genetics, biochemistry, and physiology. These are very important three fields of exploitable microorganisms is rapidly being translated into commercially available technologies for reversing, palatna, ulat dena, and preventing further deterioration of the Earth's environment. तो हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो हम लगातार डिटोरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं कि आगे डिटोरेट ना हो. तो एक सिंपल सा डायग्राम सजेस्ट कर रहा है. यू कैन मेक दिस डायग्राम इन योर एग्जाम्स टू. आई हैव टेकन दिस फ्रॉम गूगल इमेजेस फॉर योर स्टडी पर्पस. सो दिस इज एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी. इट इज इको फ्रेंडली, इट इज नॉन टॉक्सिक,
it helps in cleaning the environment and maintaining or restoring the environment. So we are using this environmental biotechnology specifically. So we have purposes, क्योंकि biological organisms use कर रहे हैं, तो it is non-toxic. So it is eco-friendly because we are using natural bioorganisms for this cleaning purpose of the environment using the biotechnology, means genetic engineering, and it helps in cleaning the environment. So it is more proper way to clean the environment. Now go further, how we do it. So this is very important. आप इसको point wise लिख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से monitoring करते हैं, how we go for sustainable development or how we renew the resources. So environmental biotechnology we are using is first for the recovery and waste utilization. For this purpose, recovery of metals and other valuable products from waste, हम बायोटेक्नोलॉजिकल वे में या ऐसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके जो कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई किए हैं या ऐसे स्ट्रेन्स डेवलप की हैं जो कि रिकवरी ऑफ मेटल कर सके, वेस्ट प्रोडक्ट से और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर सके ताकि हम उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकें. Second is restoration of environmental quality. We can restore the polluted environment to the normal one. For this purpose, we are using remediation through microorganisms. We call it as bioremediation of particularly those contaminated sites and wastewater treatment. So this is the second. Then third, we detect and monitor the environment. So detection and monitoring by using environmental biotechnology. For this, we can use biosensors and biomonitoring techniques, especially molecular monitoring techniques to detect and monitor the disturbances caused in the environment or pollutants in the environment which we are discharging. So through this use, we can monitor and detect. Then by substitution of non-renewable base to renewable base, यानी हम non-renewable को renewable से convert करें, जैसे कि हम कुछ products plant से या organism से ले सकते हैं और हम जो non-renewable sources हैं like fossil fuel, petroleum as we have discussed, उनको हम बचा सकते हैं, prevent कर सकते हैं और लंबे समय तक use कर सकते हैं. So this environmental biotechnology, we can produce बायोफ्यूल्स यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से हम फ्यूल करें अब ताकि हम प्लांट्स को या एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, है ना, मतलब दोबारा जब पैदा कर सकते हैं और हम प्लांट्स को क्रॉपिंग सिस्टम से ग्रो करा सकते हैं अपने. तो हम लोग इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल हैं लाइक पेट्रोलियम सब्सटेंसेस एंड अदर ऑयल्स. So what are, ये मैंने आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से बताए हैं important points. You will also write these points for your exam. So what are the applications? There are 6 major different types of applications of environmental biotechnology. हम इसका यूज करके यानी इस टेक्निक से हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं जिसको हम बायोरेमेडिएशन के लिए यूज करें या एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए यूज करें. फर्स्ट इज बायोमार्कर्स कि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से ही बायोमार्कर्स को प्रिपेयर करें. देन बायोसेंसर्स यानी ऐसे एपरेटर्स और वो बना दें जिससे कि बायोसेंसर्स से हम सेंस कर सकें, डिटेक्ट कर सकें. देन बायोफ्यूल्स, अभी मैंने बताया आपको बायोफ्यूल्स प्रिपेयर करें. देन नेक्स्ट इज बायोरेमेडिएशन,
हम माइक्रोब्स को यूज करते ही रेमेडी करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बायोरेमेडिएशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में इस तरह से कर पाए तो हम माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग बायोरेमेडिएट करते हैं, जैसे कहीं पे आर्सेनिक बहुत है तो हम लोग प्लांट्स को यूज करके और वहां से आर्सेनिक को हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देते हैं वो प्लांट्स, और वो प्लांट्स फूड साइकिल में कम से कम जाने चाहिए। तो जैसे हम लोग एक फर्न यूज कर सकते हैं उसके लिए, तो वो आर्सेनिक की फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं लेस टॉक्सिक फॉर्म्स में और कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसको अगर प्लांट्स यूज कर रहे हैं तो कहेंगे फाइटोरेमेडिएशन। तो इसका ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। यहाँ हम लोग माइक्रोब्स का जनरली यूज करते हैं एंड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग से इनको मॉडिफाई करते हैं ताकि वो बायोरेमेडिएशन में हेल्प कर सकें। जैसे पॉलीथीन डिग्रेड कर सके, तो पॉलीथीन डिग्रेडेशन के लिए माइक्रोब्स, जनरली पॉलीथीन क्या है, नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, बट वी कैन फॉर्म थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग सच माइक्रोब्स विच कैन डाइजेस्ट और डिग्रेड द पॉलीथीन्स। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी अब यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करके लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, देन वी कैन यूज मॉलिक्यूलर इकोलॉजी, यानी वी कैन make a genomic sequences for a specific purpose ki how we can degrade those molecular organisms like viruses etc which may do less harm to the environment. So this is all about your biotechnology part. So I have taken these two cartoons from net, but of known person. This cartoon is from known person, Dr. Pradeep Kumar Srivastava. He is a cartoonist in the science field. और इनको हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, ऐसे कार्टून्स को जो साइंस के लिए यूज किए जाते हैं इनको कहते हैं साइंटून्स। तो अब बायोटेक्नोलॉजी से ये कार्टून्स बनाए गए जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के लिए है ना। तो ये बायोटेक क्रॉप है ना, कोई बायोटेक्नोलॉजी से जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने जो डेवलप की है, दैट इज अ कॉर्न. This corn has a specific capability developed in itself through genetic engineering called drought-tolerant corn. So you can see this cartoon depicts everything. No need to say anything. You can describe, you can explain it. Means drought corn पैदा कर रहा है sun, but he is angry now क्योंकि अब तो corn पे असर ही नहीं पड़ रहा मेरी गर्मी का. And earth is happy. He is having bioremediation for this. ये रेमेडी हो गई इसकी और वो अर्थ भी खुश है कि मेरे को तो केमिकली यूज नहीं करना पड़ा कोई ऐसी चीज. और बायोटेक्नोलॉजी से ह्यूमन बीइंग्स आर हैप्पी, साइंटिस्ट आर हैप्पी, दे हैव डेवलप्ड दिस एंड कॉर्न इज ऑल्सो हैप्पी, यू कैन सी. तो ये पूरा कार्टून डिपिक्ट कर रहा है कि हाउ व्हाट वी कैन डू थ्रू बायोटेक्नोलॉजी टू सेव आवर एनवायरमेंट. So this is the proper use. लेकिन अगर हम लोग बायो वेपन्स बना लें, so that is harmful, right? So we do not have to go towards the bad things. Then this scientist is checking, means in the form of a doctor checking the health of a plant. Means we can do through biosensors. We can sense the problems of plants too. So this cartoon is made by Professor Pradeep Kumar Srivastava. I am thankful to him. So because I'm quoting him, he is very good scientist. And once हमने एक बार उनको अपने टीडी कॉलेज में बुलाया था, एक या दो बार हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में गेस्ट लेक्चर सीरीज में, और हम कोशिश करेंगे कि आगे सब कुछ ठीक हो, वी ओवरकम द कोविड पार्ट, लॉकडाउन पार्ट, एंड हम उनको इनवाइट करेंगे यहाँ पर, नहीं तो ऑनलाइन आपके लिए जोड़ने की कोशिश करेंगे. वो बहुत सुंदर साइंटून्स बनाते हैं. Okay, so these are some references I have taken online for your study purpose. Okay, come to the next part, which is again an important question. It's because with this technique we are using in biotechnology. Biotechnology में हम लोग कल्चरल टेक्निक यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग माइक्रोब्स यूज करते हैं, और माइक्रोब्स यूज करने के बाद माइक्रोब्स को भी हम कल्चर टेक्निक से ग्रो कराते हैं, वो माइक्रोबियल कल्चर्स कहलाते हैं. अब हम ट्रांसजेनिक अगर कुछ बना रहे हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, उसको भी हमें कल्चर ही करना पड़ेगा पहले लैब में. क्यों? क्योंकि जो चीज हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जीन सीक्वेंसेस हम चेंज कर रहे हैं या जीन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं थ्रू आवर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग डिफरेंट मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स,
those are when these are incorporated into the plant part or plant tissue, we have to culture it, है ना. तो जनरली एक टर्म यूज की जाती है टिश्यू कल्चर, बट जरूरी नहीं कि हम पूरा टिश्यू कल्चर करें, हम उसकी एक सेल भी कल्चर कर सकते हैं. लेकिन चूंकि ये कॉमन ब्रांच कहलाती है टिश्यू कल्चर, बिकॉज वी आर कल्चरिंग इवन एक्सप्लांट. एक्सप्लांट का मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट, और ऑर्गन, रूट, शूट, लाइक दैट, और पॉलन मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एंड्रोइशियम और कार्पल or stamen, or we are using a part of tissue means like parenchyma tissue, sclerenchyma tissue. Commonly हम सब में कुछ भी यूज करें उसको हम कल्चर टेक्निक या टिश्यू कल्चर टेक्निक कह देते हैं, क्योंकि कल्चर टेक्निक में माइक्रोबियल कल्चर, प्लांट पैथोजेंस कल्चर या फंगल कल्चर और एल्गल कल्चर अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, बट कॉमनली कल्चरल टेक्निक्स कहलाती हैं. ये शो किया गया है कि हम प्लांट्स को टेस्ट ट्यूब्स में लैब में ग्रो कराते हैं. टिश्यू कल्चर लैब उसको कहते हैं. आपके डिपार्टमेंट में टिश्यू कल्चर लैब है और बन चुकी है और डेवलपमेंट चल रहा है. हम आपको दिखा देंगे कि लैब की अभी एम्प्टी है, कि रैक्स वगैरह उसमें लगनी है, अंदर सिस्टम डेवलप करना है, बाकी रूम तैयार हो गया है और अब क्लीनिंग हो जाएगी, तो यू कैन see that room also. Okay, और हम ये देखिए, ये पहले क्या किया है, हमने एक्सप्लांट्स को ग्रो कराया है. नाउ इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू लीव्स एंड रूट्स आल्सो. यू कैन सी हियर, है ना, यू कैन सी दीज आर द रूट्स. तो ये कल्चर में डेवलप होती है. हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार करते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो अब बेसिक समझ में आता है कि कल्चर टेक्निक्स में स्पेसिफिकली अगर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं या एनिमल्स को भी किया जा सकता है कल्चर, तो हम इसको टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं. तो टिश्यू तो एक कॉमन टर्म है और उसमें हम कोई भी पार्ट ले सकते हैं. वैसे टिश्यू कहा जाए तो कहेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट. लेकिन वो टिश्यू जिसमें की ग्रोइंग पावर हो वो यूज जनरली किया जाता है. और प्लांट्स में रीजेनरेटिंग पावर लगभग हर पार्ट में होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. सो कम टू दिस, अगर ब्रीफ नोट आता है तो शॉर्ट नोट में जब भी आप लिखेंगे तो यू हैव टू डिफाइन, है ना, डिफाइन जरूर करें उस टर्म को. डेफिनेशन, भले ही डेफिनेशन टर्म ना लिखें, लेकिन 2 लाइन 3 लाइन्स और फर्स्ट 2-3 लाइन्स आपका इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन आना चाहिए. उसके बाद उस टेक्निक को कैसे फॉलो किया जाता है, या वो कितने पैटर्न में की जा सकती है, या कैसे कैसे की जा सकती है, हाउ वी परफॉर्म और यूज दैट टेक्निक. तो इस तरह से इसको एलैबोरेट करते हैं. अगर डायग्राम है और क्वेश्चन में लगता है कि दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट, तो राइटिंग पार्ट थोड़ा कम किया जा सकता है और उसमें डायग्राम जरूर ऐड करना है, बिकॉज डायग्राम गिव्स गुड मार्क्स टू यू. Okay, so now come to this technique, a method of biological research in which fragments of tissue from an animal or plant are transferred to an artificial environment. है ना, क्योंकि हम ये क्या करते हैं, दिस इज मैन मेड, और हम बनाते हैं इसको लैब में, और मीडिया in which they can continue to survive. हमें उनको सर्वाइव करना है. साथ ही साथ सर्वाइव करें तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसमें, ग्रो, यानी वो अच्छे से ग्रो भी कर सके, एंड फंक्शन, उसमें सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस उस प्लांट पार्ट के या उस टिश्यू के हो सके. So this technique is completely called as tissue culture technique, or this is called as generally tissue culture. The cultured tissue, क्योंकि हमने जो भी पार्ट लिया, एक्सप्लांट लिया, या हमने कोई एक सेल ली, या हमने इवन प्रोटोब्लास्ट वी कैन टेक, बट दैट इज डेवलप्ड इनटू अ टिश्यू. वो एक स्पेसिफिक टिश्यू में डेवलप होगा, है ना. तो हम लोग इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं. तो ये टेक्निक को टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं. द कल्चर टिश्यू में कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, population of cell, or we can call it as a tissue, or a whole or part of the plant, or called as organ. तो हम इसको organ culture कह देंगे, है ना. टिश्यू कल्चर डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कल्चर लाइक दैट, और होल प्लांट कल्चर, और पार्ट ऑफ दैट plant means organ, so we call it as organ culture, right? Okay, these are some examples of plants and animals. Commonly, we grow through tissue cultural technique, and we can save these plants: oil palm, pine, banana, date palm, khajur, eggplant, brinjal, jojoba plant, then pineapple, rubber, cassava,
yam, with sweet potato and tomato. So these are few examples among the plants which are commonly grown through tissue culture. Then examples from animal cells. Fibroblast means those tissue containing fibers, then lymphocytes, then cells from cardiac and skeletal muscles or skeletal tissues, cells from liver, then breast, cells from breast, cells from skin, cells from kidney, and different types of tumor cells we can grow into the tissue culture. ट्यूमर सेल्स को भी हम ग्रो करा के डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का ट्यूमर ये एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में हो रहा है. सो दिस कल्चर टेक्निक we use for developing these plants. Now, what is the basic concept of plant tissue culture? चूंकि आप बॉटनिस्ट है, बॉटनी के सिलेबस में स्पेसिफिकली प्लांट टिश्यू कल्चर दिया गया है. ओके, so there are two concepts to understand plant cell, tissue, organ culture and regeneration. क्योंकि we know that each and every cell of the plants have regeneration capability. You know, if somatic cells, definitely they have mitotic division and they regenerate to form a complete part, organ or plant. So we have two basic concepts behind that. One is plasticity of the plant parts or plant cells. That is ability to initiate cell division from almost any tissue of the plant. Second is ability to regenerate lost organs or undergo developmental pathways in response to particular stimuli. So this two important characters shows the plasticity of the plant cells. प्लास्टिसिटी का मतलब है उनमें इतनी पावर है ना. प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि इसमें इतना जैसे रबर बैंड है, इलास्टिसिटी कहते हैं. प्लास्टिसिटी मींस एबिलिटी टू मॉडिफाई देमसेल्फ, राइट. सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज टोटिपोटेंसी. What totipotency is? इस पे शॉर्ट नोट अलग से भी आता है कभी कभी. टोटिपोटेंसी पे शॉर्ट नोट ऑन टोटिपोटेंसी, maybe 3 marks or maybe 5 marks. Each cell has the capacity to regenerate the entire plant. एक सेल में पूरा प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी है, लेकिन हमारी बॉडी में नहीं है. अगर हम एक सेल लें तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से या बायोटेक्नोलॉजी से या कल्चरल टेक्निक से पूरा एनिमल नहीं बना सकते, है ना. क्लोनिंग की पावर तो हर सेल में होती है, लेकिन इस तरह से हम कहें कि हमारी स्किन की सेल जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगी, है ना. तो इट इज नॉट पॉसिबल. वी नीड जाइगोट टू फॉर्म द एम्ब्रियो, है ना. तो मेल और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों चाहिए उसमें. हाँ, हेप्लॉइड से भी कंडक्ट किया जा सकता है आर्टिफिशियली इन द लैब. By changing the environment, by giving some chemicals or hormones, we can do so, giving nutrient media. But plant cells have the natural capability. Then cell lines differentiate to form specialized tissue and organs. Unlike animals, living plant cells redifferentiate, है ना. मतलब मैंने कहा कि क्या है, एक सेल से रूट भी बन सकती है, शूट भी बन सकती है, लीव्स भी बन सकती हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी बन सकती हैं. तो हर सेल में ये कैपेबिलिटी प्लांट्स की होती है. अगर हम, मैंने कल भी बताया नेक्स्ट लास्ट क्लास में भी, कि अगर हम स्टेम कटिंग लगाएं तो स्टेम के नीचे के पोर्शन से रूट्स और ऊपर के पोर्शन से शूट, कंप्लीटली लीव्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. रोज की तो कटिंग ही लगाई जाती है, है ना. बनाना कटिंग से किया जाता है. तो इसका मतलब बहुत सारे, इवन शुगर केन, गन्ना, तो इसका मतलब उसमें ये कैपेबिलिटी है डिफरेंशिएशन की. यानी सेल लाइंस जो है वो डिफरेंशिएट होकर के डिफरेंट और पार्ट्स बना सकती हैं, लेकिन एनिमल्स में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है. हाँ, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था रेप्टाइल्स में, अगर उसकी टेल कट जाती है तो वो टेल की वहां सेल्स जो है उनमें कैपेबिलिटी है टेल बनाने, है ना. लेकिन कोई और पार्ट बॉडी का नहीं टेल बनाएगा, वो वही का पार्ट बनाएगा. सो देयरफॉर टिश्यू कैन बी रीजेनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट्स. यानी हम प्लांट का कोई भी पार्ट लें, सच एज कोटिलीडन, hypocotyl, these are the parts of seedlings, leaf, ovary, protoplast even,
मतलब सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट को भी हम रीजनरेट करा सकते हैं, पीटियोल, रूट, एंथस एंड सो मेनी, सो ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये एक मैंने डायग्राम आपके लिए लिया है इसको, कि यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट की हर पार्ट में ये होता है। तो सेल वॉल, सेल्स कांट मूव, है ना, लेकिन क्या है कि सेल्स मूव नहीं कर सकती, लेकिन सेल्स हैव द प्लास्टिसिटी। प्लांट्स डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, राइट। तो प्लास्टिसिटी जो भी एनवायरमेंटल हमारे पास रिस्पॉन्सेस हैं वो शो करती हैं प्लांट्स। Then totipotency, most plant cells can form an entire new plant given the correct signals. अगर उनको सही signals मिल जाएंगे, signaling is important part, that is genetically controlled जो भी प्रोसेसेस है होगी, तो इसको हम कहते हैं करेक्ट सिग्नल। एनवायरमेंटल सिग्नल्स भी हो सकते हैं, नेचुरल जेनेटिक सिग्नल्स भी हो सकते हैं। तो दिस इज कैरेट, सब लोग पहचानते हैं। कैरेट को सबसे ज्यादा यूज किया गया टोटिपोटेंसी के लिए। तो ये डायग्राम बना सकते हैं, एक डायग्राम और दिखाओगे आप, वो बना सकते हैं इसको। तो इससे हमने यहाँ से कोई भी ये सेल्स ली, and these cells taken through transfer section of the carrot root, सिंपली हम लोग लैब में कर सकते हैं। हमने यहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स ले लिए फ्लोएम टिश्यू के। फ्लोएम को आप पहचान सकती है, जब हम कट सेक्शन करते हैं तो जो अंदर ये सिलेंडर है, यहाँ का ये पोर्शन लिया गया, देखिए आई हैव ऑल्सो मार्क्ड इट, दिस पोर्शन इज फ्लोएम। फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, उसमें वो फूड मटेरियल, वो कैपेबिलिटी है दैट मे ग्रो इनटू, और हम न्यूट्रिएंट मीडिया यूज करेंगे तो हमने फ्लोएम की सेल्स ली। हम कोई भी पार्ट ले सकते हैं, ओके। हमने इसको एक पर्टिकुलर, वी नो दैट बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रायल्स की कौन सा कल्चर मीडिया हमको लेना है ना। तो कल्चर मीडिया भी कई तरह के होते हैं, वाइट्स मीडियम होता है, एमएस मीडियम होता है, इस तरह से बहुत सारे मीडियम हैं हम लोग ले सकते हैं, जिनमें हम लोग कोकोनट मिल्क भी ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट भी ऐड करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर रेशियो है। तो आई विल शो यू इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। देन this is cultured in the culture medium, into the flask, into tube, or so whatsoever what we have for culturing glassware. Now these developed into some undifferentiated mass. तो जब इनिशियली मास डेवलप होता है, वी कॉल इट एज कैलस, है ना, बिल्कुल एक मास का लोथा जैसा, तो वी कॉल इट एज कैलस, यानी some tissue is developed or proliferating of these cells from one to other. इसके बाद इसमें कुछ स्टार्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन, इट लुक्स लाइक एम्ब्रियो, इफ इट इज डाइकॉट प्लांट इट अपीयर्स टू बी डाइकॉट एम्ब्रियो, है ना। तो इसका मतलब इसमें जो है वो एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है, इट मींस द सेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रो इनटू एम्ब्रियो। नाउ बिकॉज इट इज डिप्लॉयड, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है कि हैप्लॉइड है तो फर्टिलाइजेशन होगा तब डिप्लॉयड बनेगा, तो ये हैप्लॉइड से, हैप्लॉइड और डिप्लॉयड से डिप्लॉयड का फॉर्मेशन, तो दिस इज डाइकॉट प्लांट, डिप्लॉयड बना। नाउ दिस ग्रोज इनटू द प्लांटलेट, है ना, छोटा सा प्लांट या सीडलिंग जैसे ग्रो करता है सीड से, इसको हम चूंकि प्लांट ग्रो कर रहा है कैलस से और टिश्यू से, इसको प्लांटलेट कहते हैं। इसमें रूट का सेक्शन और रूट का डेवलपमेंट और शूट का डेवलपमेंट होता है, एंड लेटर ऑन व्हेन वी ट्रांसफर दिस इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट, दिस ग्रोज इनटू द carrot or mature plant. So this is called totipotency, means any cell of the this carrot root, this is root or storage part of the carrot, है ना, underground storage root है, तो उसमें ये capability है। So you can take this diagram or other diagram I am going to show. अब अगर totipotency पे short note है तो what you have to write, totipotency is the genetic potential of a plant cell to produce the entire plant. In other words, totipotency is the cell characteristics in which the potential for forming all the cell types in adult organism is retained. तो उसमें सारी चीजें होती है। Then expression of totipotency in culture, the basis of tissue culture is to grow larger number of cells in a sterile controlled environment. The cells are obtained from stem, root or other plant part and are allowed to grow in culture medium. हम कोई भी पार्ट लें और उसको culture medium में grow करें, जिसमें क्या होना चाहिए, containing minerals, nutrients, vitamins and hormones. ये ग्रोथ के लिए जरूरी है, टू एनकरेज सेल डिविजन एंड ग्रोथ।
As a result, the cell in the culture will produce an unorganized, undifferentiated, proliferative mass of cells which is known as callus tissue. तो अगर callus पे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, what is callus? So you may define this: an undifferentiated, unorganized, proliferative mass of cells developed into the culture medium called as callus from any part of the plant or any cell of the plant. ये यहाँ शो किया गया है, इसमें कोई रूट नहीं है, कोई शूट नहीं है, बस एक स्लाइट लाइट ग्रीन मास है. ये जो क्या है, ये है कैलस. सो दिस इज कॉल्ड एज कैलस. इट इज अनऑर्गेनाइज्ड प्रोलिफरेटिव टिश्यू, यानी एक सेल से मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन होना. देन what a totipotent cell do? This totipotent cell differentiate. Now differentiation after the callus formation takes place. तो यहाँ पर क्या बना? सबसे पहले बना callus, right? Callus has been formed. Okay. Now it differentiate, and how it differentiate? It may differentiate and form embryo, means embryogenesis takes place, or directly proliferate into the organ development called as organogenesis, or may form different types of cells or tissues called as histogenesis. Tissue. तो histogenesis और cytodifferentiation, यानी सेल में डिफरेंशिएशन होना, xylem cells का बनना, phloem cells का बनना, and so on. तो histogenesis. Now, if it goes for embryogenesis, is form embryo, but in embryos को हम कहते हैं embryoid because they are similar to dicot or monocot embryo. So these are called as embryoid. Then they may develop into the complete plantlet. अब पहले plantlet बनेगा, then फिर adult और complete mature plant. If it goes for differentiation into organogenesis, पहले cologenesis. Colo means only stem is formed, है ना? Organ में केवल stem बनेगा, तो we call it as cologenesis. Only shoot or stem is formed. शूट पे फिर लीव्स का भी फॉर्मेशन होगा, तो शूट इज कंप्लीटली स्टेम प्लस लीव्स कॉल्ड एज शूट. इवन शूट कंसिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, है ना? हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव शूट एंड वेजिटेटिव शूट. देन इफ इट गोज फॉर रूट डेवलपमेंट कॉल्ड एज राइजोजेनेसिस, ओनली रूट इज फॉर्म्ड. इफ इट गोज फॉर बोथ रूट एंड शूट, यानी दोनों नीचे रूट और ऊपर शूट का डेवलपमेंट हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज कोलोराइजोजेनेसिस. Both the terms are incorporated in one, means shoot development as well as root development, or shoot with root is developed. If it goes for cytogenesis or cytodifferentiation or histogenesis, only some tissues are formed. अगर हमने phloem लिया है तो phloem से phloem का निर्माण हो सकता है, या phloem से xylem का भी हो सकता है, but we know that क्या nutrient media, क्या hormone देना है for development. तो if xylem is formed, then xylodifferentiation, phloem is formed, then इसको हम बास्ट भी कहते हैं, बास्टोडिफरेंशिएशन. तो इस तरह से xylem और phloem का डेवलपमेंट. तो टोटिपोटेंसी में डिफरेंशिएशन goes for 3 parts separately according to nutrient medium and the stimuli it is getting from external environment and genetic environment. ये दूसरा है टोटिपोटेंसी का डायग्राम. You may take this diagram even. This is the same diagram. अगर हमने इसका कोई भी पार्ट लिया है, लीफ पार्ट, शूट पार्ट, रूट पार्ट, स्टोरेज रीजन, इसको हम कहते हैं एक्सप्लांट. कोई भी सेल लेना या कोई भी टिश्यू का पार्ट लेना, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लांट. अब एक्सप्लांट इज ग्रोन इन टिश्यू कल्चर मीडिया और न्यूट्रिएंट मीडिया. ये मीडिया है को पेट्री डिशेस में, ट्यूब्स में, कोनिकल फ्लास्क में ग्रो करा सकते हैं. जब ये अनडिफरेंशिएटेड प्रोलिफरेटिंग मास होता है तब हम इसको कैलस कहते हैं. व्हेन इट इज डेवलप्ड इनटू स्पेसिफिक शेप शोइंग एम्ब्रियो लाइक, इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोइड. व्हेन इट डिफरेंशिएट इनटू डाइकॉट एंड मोनोकॉट टाइप ऑफ एम्ब्रियो, developing into the plantlet or grow to develop into plantlet, is called as embryo. Then it develops root and shoot. Then it is called as plantlet. So this is called as totipotency in plants. तो ये आप डायग्राम ऐड कर सकते हैं. ये टिश्यू कल्चर के लिए पूरा प्रोसीजर शो किया गया है. इसमें हम लोग प्लांट से
एक्साइज लीफ ले सकते हैं कल्चर के लिए, या कुछ सेल्स ले सकते हैं, आइसोलेटेड सेल्स, उसी तरह ग्रो कराएंगे। पहले मास डेवलप होगा कॉल्ड एज कैलस, देन इट इज डेवलप्ड इनटू प्लांटलेट्स। अभी हम लोग लैब में ही काम कर रहे हैं। देन वी शिफ्ट देम इनटू द ग्रीन हाउस, है ना, कि लैब टू लैंड ले जाना है तो सीधे नहीं लगा सकते हम लोग खेतों में, तो हम इसको ग्रीन हाउस में लगाते हैं। देन ये ग्रीन हाउस में पॉट्स में लगा सकते हैं, या हम जब ये पॉट्स में ग्रो करने लगते हैं तब हम इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यानी लैंड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस, टिश्यू कल्चर प्रोसेस को यहाँ शो किया गया है। ओके, तो माई टाइम इज रनिंग आउट, 1 minute 50 seconds left. I will continue with plant tissue culture in the next lecture tomorrow evening. That is brief history. Then tomorrow we'll complete this plant tissue culture technique. If anyone has any query, you may raise your hand. So I will unmute you or ask you to unmute, or you may write in the chat box. ज्योति, कल्पना, किरण, महिमा, निवेदिता, नुसरत, प्रीति, रिचा, शालिनी. Okay, Kalpana says that explain the explants again. Explants का मतलब होता है, अगर हम इसको elaborate करें, excised part of the plant. एक्साइज का मतलब EXCISED, एक्साइज का मतलब काटा गया, तो इसको शॉर्ट में एक्सप्लांट कहते हैं। तो हम किसी भी प्लांट के पार्ट को सेपरेट और कट करके लेते हैं कल्चर के लिए, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्सप्लांट. एक्सप्लांट मीन्स एक्साइज पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, जिसको शॉर्ट में EX लिख दिया जाता है ना. एक्सप्लांट पे आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, व्हाट इज एक्सप्लांट. तो आप लिखिए एक्साइज पार्ट ऑफ any part of the plant, maybe cell, maybe tissue part, xylem, phloem, cortex, you may write example, or organ like stem part, leaf part, root part, maybe anther,